Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Please confirm that you can hear me and the screen is visible. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Okay, thank you very much for your confirmation. So today is a very important topic related to the finding the bearing capacity of shallow foundations. More specifically, we are going to calculate the bearing capacities for different types of shallow foundations. Now, in order to do that, you need to remember and you need to note down few important equations, tables, and figures which will be helpful in today's class in solving quizzes, assignments, and ultimately you will also be able to solve problems during the exams. So today is a very important lecture, and please kindly take a pen, paper, and a calculator in your hand so that you are also solving these numericals and problems along with me, and also note down those equations and tables and figures. So first of all, you need to note down this equation, which is used to find out the ultimate bearing capacity equation using bearing capacity factors, cohesion, and the surcharge, and the unit weight, and the weight of the width of the foundation. All these parameters are included in this equation, which was proposed by Tirzaghis. Then he proposed various shape factors. So please kindly also note down this equation. You can take a picture or a screenshot if you are connected via laptop or PC, or you can also take a snapshot of the using your cell phone, because we are going to use this table in today's class. For example, for strip footing, the SC and S gamma would be 1 and 1 respectively. For the circular foundation, SC would be 1.3 and S gamma would be 0.6. So these are the shape factors respectively. And for the square footing, 1.3 and 0.8 SC and S gamma respectively. There is circular foundation हम कहाँ provide करते हैं? Sorry? There is circular foundation sir, because हमने नहीं देखा है जितने भी होते हैं वो rectangular होते हैं, तो इस circular foundation हम पर भी होते हैं. सर्कुलर फाउंडेशन आपने नहीं देखी. सर्कुलर फाउंडेशंस भी होती हैं पोल्स के नीचे, जो है ना हमारे पास होती है ना, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे कैसी फाउंडेशंस होती हैं. अभी आप जाएं, आप देखें इलेक्ट्रिक पोल्स के नीचे जो है ना, वो आपको सर्कुलर फाउंडेशंस ही मिलेंगी. और कुछ कॉलम के नीचे भी हो सकती हैं. अच्छा, इसकी भी आप पिक्चर काइंडली आप ले लें. ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फिगर है. Today we are going to solve examples and problems. Table की भी ले लें. Usually table is not given in the exam. Usually this figure is given. Table is unlikely to be present during the exam, assignments, and quizzes. The water table effect table, please kindly take a screenshot and note down the various cases or the location of the water table and how it will affect the second and third term of
the bearing capacity equation. One important thing is to note down the equation of the height of the wedge beneath the foundation. Okay, so that would be the equation which we are going to solve problems. If you remember, we went for the Meyerhoff's bearing capacity equation. So please kindly note down this equation, or you can take a screenshot of this equation having various bearing capacity factors okay, bearing capacity factors, shape factors. You can take a screenshot or you can note down these equations, and you can also use depth factors, the Kp coefficient, and also the inclination factors IC, IQ, and I gamma. Then the eccentric loading cases, you can note down the EB and EL, which we know the moment in the direction of width of the foundation and moment in the direction of length of the foundation. And then we will find out the effective width using this equation. So please kindly note down this equation as well. And this is 2L, 2EL, okay? L minus 2EL would be the effective length of the foundation. And then if you want to find out the effective area, so you can use this equation. In case of the minimum and maximum bearing pressure, or the largest or the lowest bearing pressure and the lowest bearing pressure in eccentric loading condition, you can use this equation in problems or numericals, and then we can compare that with the ultimate bearing capacity of that soil as well. So that's all with the noting down. Now we will straight away start with the problems. And as I requested that please kindly take one pen, paper, and a calculator in your hand, because you are going to help me in today's class. Now we are given with a square footing, and that square footing is having a width of 2.5 meter, and the pressure which is exerted, the gross pressure, is 400 kilonewton per square meter. The depth of the foundation is equal to 1 meter.
Now there are three cases. For example, if you draw like this, in the case number 1, this is case 1, this height of the water table, or the depth of the water table, would be 5 meter. Okay, and then in the next case 2, this is 1 meter, and that would be case 2. In the case 3, water table would be at the ground level. Now if you want to use the unit weights, so if we want to use the unit weight, the saturated unit weight would be 20 kilonewton per cubic meter, and the water table above the unit weight above the water table would be 17 kilonewton per cubic meter. Now we also need the shear strength parameters. So C prime is equal to 0, and phi prime, or the effective shear strength parameters, 40 degree. Now we need to determine the factor of safety in these three cases: case 1, case 2, and case 3. Is it clear? Yes, sir. Okay, so what's the step 1? Step 1 in solving this problem. So this is the Q applied. How we are going to do that? I need at least 3 volunteers. And those volunteers who will contribute in today's class or overall in every class, they will be given extra edge. और एक्स्ट्रा एज क्या होगा? जब क्विज में कोई कम नंबर आते हैं या असाइनमेंट में कोई कम नंबर आते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर मेरा जो असाइनमेंट चेक करें या क्विज चेक करें, तो उन केसेस में टीचर सारे स्टूडेंट्स की जो है ना वो चेक नहीं कर सकते हैं कि मतलब उसको बहुत गौर से देखें। डेफिनेटली करते तो हैं, लेकिन एक्स्ट्रा अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे नंबर क्यों कम आए हैं सर, तो आप अप्लाई भी ना करें, फिर भी मैं, अगर आप मुझे कहते हैं कि आप मेरे मिड टर्म को सर दोबारा चेक कर लें, मेरे मार्क्स कम आए हैं, या आप इस तरह करके, पहले भी मैंने किए हुआ है और इंशाल्लाह मैं बाद में भी करूँगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको खसूसी जो है ना वो मैं एक फेवर दूंगा। जो लड़के या जो स्टूडेंट्स इसको क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। और आप मुझे बता भी सकते हैं कि सर मैंने एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेशन की थी और बेस्ड अपॉन दैट डिस्कशन आई नीड दिस फेवर, दैट प्लीज काइंडली रीचेक माय पेपर और please reconsider my quiz as well. So 1 time, 2 times I can give you that favor as well. So based upon your discussion. Okay, so this is the problem. You can take a screenshot or you can take a picture using your cell phone.
because we are going to a next window here. So what we are going to do next, if you want to find out the factor of safety, using Terzaghi's bearing capacity equation. अल्टीमेट फाइंड करेंगे. Q ultimate find करेंगे. Name please. Usman. Q ultimate. How we are going to find out Q ultimate? Okay. Good start. What next? Q net फाइंड करेंगे. How? I don't remember, sir. Sir, Q grass minus gamma D. Okay. Anyways, we will first find out the Q ultimate. How we will find out the Q ultimate? So give me the value, please. I need the value. Please calculate. I need the value. Okay, now we will go for the bearing capacity factors. Terzaghi's bearing capacity factors and NC, NQ, and N gamma. I need these parameters for phi is equal to 40 degrees. These bearing capacity factors. 1, 2, and from 3 students. Sir, NC 95.7. 95.7. Oh, NQ NQ 81.3. 81.3. Okay. 81, sir. 81. 100.4. And gamma 100.4. 100.4. Any disagreement with the NC, NQ, and N gamma values? Okay, so we will move with the shape factors. How about SC and S gamma? SC 1.3 है, sir. दूसरा 0.8 है. Okay, then we will move towards the finding what? Q ultimate फाइंड करेंगे. Okay, so give me the Q ultimate value. 1, 2, 3. You have the bearing capacity factors, you have the shape factors.
Please give me the Q ultimate using Terzaghi's bearing capacity equation. 155 8.9. 155 8.9. 8.9. Anyone else with the disagreement? Whether it's for the case 1, whether it's for the case 2, or whether it's for the case 3. What's your name, please? Your name, please. 155. Haji? Uzair Rahman. Uzair Rahman. Okay. सर केस 1 के लिए 3088 kPa. केस 1 के लिए 3088. अच्छा, केस 1 के लिए पहले मुझे दे दें, ठीक है ना? 30. वाटर टेबल जब 5 मीटर पे हो उसके लिए कैलकुलेशन की. That is also for the case 1. Okay. 3088 kilopascal. Name, please. वकार हकीम. Name, please. Waqar Hakim. Okay. Thank you. Sir, shear value 3088 kilopascal. 3088 kilopascal. Name, please. Mashal Shahjahan. Okay. So, do you want to check or do you want to revise your value? Uzair, please kindly recalculate, because this value seems to me okay. मैंने जो कैलकुलेशन की है वो वाटर टेबल 5 मीटर पे जब हो उसके लिए कैलकुलेशन की. ओके, जब वाटर टेबल 5 मीटर पे हो, तो वाटर टेबल जब हमारे पास 5 मीटर पे होता है तो हमें एक चेक लगाना होता है कि b/2 टेंजेंट 45 प्लस φ/2 से, ठीक है? वो हमारे पास कितना आ रहा है? हाँ जी, वो हमारे पास कितना आ रहा है? वो हमारे पास 2.68 मीटर आ रहा है. एग्री? 2.68. जो कि लेस देन है 5 मीटर के. सो इट मींस कि हम 17 को इस्तेमाल कर सकते हैं, गैमा को 17 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बोथ टर्म्स, जो सेकंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है, वो अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वाटर टेबल हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है? क्योंकि वेज हमारे पास जो है ना वो 2.63 मीटर का बन रहा है और वाटर टेबल यहाँ पे, तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म अफेक्ट नहीं हो रहा. ये अगर हमारे पास फाउंडेशन है तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास H आ जाएगा. अच्छा, नाउ case 1 will give us Q ultimate of 3088 kilopascal. So what should be the factor of safety then? सर 3088 divided by 400. So give me the value, please. 7.72. That is the applied load and this is the ultimate load. Now we can find out that the factor of safety would be 7.7. That was for the case number 1. Now what will happen if the water table is here? For example, case 2, I need Q ultimate value
1, 2, 3, and I need FOS value 1, 2, and 3. Now, if the water table is at the foundation level, how it's going to change the factor of safety or the Q ultimate? Because the third term would be affected. And we are going to use the effective unit weight, which would be 20 minus 9.8, 10.2 kilonewton per cubic meter. So in the third term, you are going to use the effective unit weight. And the second term, which is above the foundation level, it's not going to change. 17 kilonewton per cubic meter. Please give me the Q ultimate for case number 2 and factor of safety for case number 2. And the water table is at the foundation level. Or 1512.57. 1, 5. Please kindly repeat. 1512.57. Name, please. Zero Rahman. Uzair, okay. Second value, please. Sir, 1497. 1497. Please calculate. I need a third value here as well. And please kindly find out the factor of safety as well. 3.78. 3.78. 78. Okay, that's for Uzair. 3.7. 3.7. Okay, Wakar. Ji, sir. Okay, I need a third value here.
1.25. Okay. Anyone else? Hamid, Ibrar, Janita Lal Zaman, Nahil, Mashal, Muhammad Anis, Usama. I need Q ultimate for the second case, please. In fact, I would say I need two more values here. Q ultimate 2406. 2406. Okay, 2406. I would request Uzair and Waqar to recheck their answers, and I need another confirmation here as well. Name, please. Mashal. Amna. Okay, Amna. Thank you. 1853.3. 1853.3. Name, please. Ibrar. Ibrar. My answer is close to the third one. It's 2406 kilopascal. Sir, 2406. 2406. Name, please. Yes, sir. Okay. Now, Mashal. Okay. सर हमसे गलती किधर हुई है हमें दिखाई दे। बस ये आप देख लेना, तो सर सही ये आप देख लें कि गलती आप किधर हुई है। हम आप उसको बता दें, मशाल आप उसको बता दें कि गलती आपने किधर की है। इसमें डेप्थ कितनी लिया आपने, एन क्यू कितना लिया है, गामा प्राइम कितना लिया है। सिंपल तो इक्वेशन है, इसमें है क्या कॉम्प्लिकेटेड। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिंपल इक्वेशन है कि मुझसे गलती किधर हुई है। बस कैलकुलेशन एरर है। ये इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन। अगर आप ये आंसर मुझे देंगे, मैं आपसे मिनिमम 2 नंबर काटूंगा, -2 स्ट्रेट अवे। अगर 10 नंबर का जो है ना क्वेश्चन है, आपको 8 मिलेंगे। गलती कहाँ पे हो रही है? गामा प्राइम कितना है? 17 है, डी 1 है, एन क्यू की वैल्यू क्या ली है आपने? 81.3। ठीक है, गामा प्राइम क्या लिए हुआ है? 10.2। बी क्या कितना लिए हुआ है? कौन सी चीज सर? बी विड्थ ऑफ द फाउंडेशन 2.5 सर। गुड, ओके। एंड गामा? एस गेम 0.8 और एन गामा? एन गेम 17.3 सर। 17। सॉरी सर, यहाँ पर गलती हुई है मुझे। 10.4 सर। सर मैंने 100.8 100.4 लिया था, लेकिन वो 100.4 है, मैंने 10.4 लिया। गलती नजर आ गई है कि नहीं नजर आई? जी सर, आ गई अभी। बस ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन जो कर रहे होते हैं ना, उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। मैं वैसे गपशप में बोल लेता हूँ, बाकी कुछ लोग माइंड भी कर जाते हैं। तो जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, उनके ग्रेड्स अच्छे आएंगे। जो कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। आपको एटलीस्ट पता तो चल गया कि कहाँ पे गलती हुई है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए पार्टिसिपेट करें प्लीज, काइंडली। ओके, नाउ वी विल मूव सर मैंने टुवर्ड्स एग्जाम अभी द 100 लिया था। मुझे हमारे पास बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स क्या थे? 100.4। तो एन गामा ठीक है ना, 100.4 है आपके लिए, तो मसला नहीं होना चाहिए। आपने कहाँ पे गलती की है? इब्रार, सर आप ये क्यों गलती कर रहे हैं? कैलकुलेशन यूज किया, लेकिन 1800 आंसर आ रहा है। बस फिर आप उसको देख लें।
एडिशन सब्ट्रैक्शन को आप देख लें, ठीक है ना। अलहदा अलहदा कैलकुलेट करें, अलहदा अलहदा आपके पास क्या आ रहा है, सेकंड टर्म से क्या आ रहा है वो मुझे बताएं। सेकंड टर्म से आपके पास जो है ना वो क्या आ रहा है, और थर्ड टर्म के पास जब कैलकुलेट करते हैं उससे क्या आ रहा है, व्हाट यू गेट फ्रॉम द सेकंड टर्म एंड व्हाट यू गेट फ्रॉम सेकंड द से थर्ड टर्म। 830, सॉरी, सेकंड टर्म से 830 आ रहा है। ओके, नाउ फॉर द थर्ड टर्म। सर ये सेकंड टर्म की वैल्यू गलत है, सेकंड टर्म से 1382.1 आ रहा है। Okay, let me check here as well. सेकेंड टर्म से 1382.1, आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। 17 मल्टीप्लाई बाय एन क्यू, क्योंकि ये तो 1 है। एन क्यू आपके पास क्या है? सर 17 होगा, ये 10.2 होगा। केस 2 है, केस 2 है, फाउंडेशन लेवल पे है। फाउंडेशन लेवल के ऊपर जो है ना हमारे पास क्या यूनिट वेट होगा, खुद सोचें। इसलिए तो मैंने आपको बताया था कि टेबल को जो है ना नोट डाउन कर लेना। ऑब्वियसली बात है 17 होगा, लिखा भी हुआ है 17 है यहाँ पे, और यहाँ पे 10.2 है। एनीवेज, ओके, इसको सॉल्व करें, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। एंड फॉर केस 3, जब हमारे पास सेम केस हो लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमारे पास वाटर टेबल हो और इवन के सीपेज हो रही हो ऊपर भी, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर भी जो है ना हमारे पास उससे सीपेज हो रही हो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उसका कितना हो, 0.2 हो, तो उस केस में आपने सिर्फ ये करना होता है कि आपने गैमा प्राइम शुड बी इक्वल टू गैमा सबमर्ज्ड आई इंटू गैमा डब्ल्यू, ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी होती है टू फर्दर रिड्यूस द इफेक्टिव यूनिट वेट। तो आपने ये इफेक्टिव यूनिट वेट इस्तेमाल करना है और आपने क्यू अल्टीमेट फाइंड करना है। और गैमा प्राइम हमारे पास क्या हो जाएगा, गैमा सबमर्ज्ड हमारे पास 10.2 था, 0.2 इंटू 9.81, तो ये हमारे पास आ जाएगा 08.24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो ये यूनिट वेट इस्तेमाल करें, इसको यूज करें और आप फाइंड आउट करें कि आपके पास क्यू अल्टीमेट यूजिंग तिर्ज़ाग़िज़ बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन क्या आती है। अच्छा, यहां से आप क्या कर सकते हैं कि अगर 2406 को 400 पे जो कि क्यू अप्लाइड है उस पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आ जाती है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, 3.7 आ जाती है। पिछले केस में हमारे पास क्या थी, पिछले केस में हमारे पास 3.7 थी, फिर हमारे पास 7.7 थी, इस केस में हमारे पास 3.7 हो गई। ये हमारे पास केस 1 है, ये हमारे पास केस 3.7 नहीं है, कितनी आ रही है, 6 आती है सर। 6.01। 6 है। ओके सॉरी 6 आ रही है, सही है। ये हमारे पास आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास केस 2 में 6 है, और केस 3 में हमारे पास क्यू अल्टीमेट कितना आ रहा है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ क्यू अल्टीमेट फॉर केस 3? 1497। 1497. Okay, thank you. Now, 1497.2. okay, good. Thank you. Now for the factor of safety value, 149. फिर गलत आ रहा है? यस सर।
894 आ रहा है गामा प्राइम क्या ले रहे हैं आप? सर वो 8.82 8.82 ले रहे हैं कि 8.24 ले रहे हैं? सॉरी 8.82 सर मैंने लिया था, गलती हो गई। आप किधर देख रहे हैं? आप अपना नाम बताएं मुझे। उज़ैर सर। उज़ैर, क्या कर रहे हो? सर असल में आपने जो उधर लिखा ना तो पहला उधर मैं 17 लिख लेता हूँ गामा प्राइम के लिए सेकंड टर्म के लिए, और आप क्या ले रहे हो? आप कभी 20 ले रहे हो, कभी 10.2 ले रहे हो। अभी ये सामने लिखा हुआ है मैंने कि यहाँ पे आपने गामा प्राइम क्या लेना है, जो रिड्यूस्ड है ड्यू टू द सीपेज और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से रिडक्शन हो रही है यूनिट वेट में 8.24, आप जो है ना यहाँ पे 8.82 ले रहे हो। सॉरी सर वो मैंने सुना नहीं। चलें, यहाँ पे ख्याल रखें, ये पेपर में अगर आप जो है ना गामा कुछ दिया हो और आप कुछ इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर तो आपके मार्क्स जो है ना वो रिड्यूस होंगे। तो फिर आप आएंगे और कहेंगे कि सर मैंने तो पार्टिसिपेशन की थी, और जब पार्टिसिपेशन की है लेकिन यहाँ पे गलत हो फिर मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। ये मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, ठीक है? यहाँ तक है कि मैं पेपर तक आपको ले आऊंगा और आपके सामने रख लूंगा कि ये देख लो अभी यहाँ पे गलती है। अगर आप दूसरी वैल्यूज इस्तेमाल करोगे वो तो सही बात नहीं है ना। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? 3.7. अच्छा, यहाँ पे 3.7 है। नाउ व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस, आई नीड अ शॉर्ट डिस्कशन हियर। अगर हमारे पास, हाँ प्लीज, वाटर टेबल जितना ऊपर होगा उतना सेक तो फ्री रिड्यूस हो जाएगी। Yeah, so water table will affect the ultimate bearing capacity of the soil. If water table is, for example, here, the ultimate bearing capacity of the soil would be different. If the water table is at the foundation level, the ultimate bearing capacity of the soil would be different. And in this case, we will be having greater factor of safety than in the middle, and the lowest factor of safety or the ultimate bearing capacity would be for the case number 3. Now we are given with another problem, and that's for a strip footing. Dead load is 500 kilonewton per meter. Live load is equal to 300 kilonewton per meter. Here we are given with the width of the foundation. In fact, we need to find out the width of the foundation. The depth of foundation is equal to 0.7 meter. We need to find out the B when factor of safety is equal to 3 against the shear failure of the soil, and we can assume that the water table may rise to the foundation level. Okay, the unit weight here would be 17 kilonewton per cubic meter, and the unit weight for the saturated soil would be 20 kilonewton per cubic meter. What else we need? Yes, we need the value of C prime, just in parameters. P prime is equal to 40 degree. That's 40.
Unit weight, I would say gamma and gamma saturated, and factor of safety is equal to 3. Take a picture, screenshot of the screen, and then we will move towards the step number 1. What's the step number 1? From where to start? Q ultimate. ultimate. Okay, so we will start with the Q ultimate. How we are going to find out the Q ultimate? Design. Using Terzaghi's bearing capacity equation. Factor of safety which we applied. Okay, we will start with the factor of safety. How? Multiply Sir, the dead load factor of होगा ना? safety with the Q applied to get the Q ultimate. Okay, that's a good point. And then we will get the Q ultimate. What's the Q applied? What's the 800 value? 800 kilonewton per meter. This is pressure. Ibrar. Strip footing. B unknown. How we are going to proceed? 800 divided by B. Name please. Waqar Sakin. Thanks Wakar. B into L, where L is greater than B. So we will assume L is equal to 1 because the length is greater or very much greater than the width of the foundation. That will give us the Q ultimate, or 3, I would say 2400 divided by B into 1 is equal to Q ultimate, or we can write that as 2400 divided by B. This will be the Q ultimate. Agree? Note down that Q ultimate now. Now, this is one equation that we got with the Q ultimate. But we can also find out using the bearing capacity factors. How? I would say let's find out bearing capacity factors for phi is equal to 40. Give me NC, NQ, and N gamma. NC 95.7. 95.7. 81.3. And 81.3. 100.4. 100.4. I guess we also use these factors previously. Yes, C prime is equal to 0. So the first term will be equal to 0 here. So we can use the second term and the third term. And if we use that, what would be? So we can write Q ultimate equal to something here.
plus something here with B. Agree? So this would be the Q ultimate is equal to the second term and the third term having B in here. And then we will find out, solve for the B. Give me the value of B, please. शेप वेक्टर्स भी सर वही होंगे. शेप वेक्टर्स ना अप्लाई करें. No need for Tezaghi's bearing capacity equation for the strap footing and shape factors तो वैसे भी 1-1 है, कोई मसला नहीं है. Strap footing है, ठीक है. उसके लिए तो वैसे भी SC और S gamma हमारे पास क्या है, 1 के बराबर है और यहाँ पे भी 1 के बराबर है. अप्लाई कर भी सकते हैं, अगर कर भी लें तो 1-1. What would be the value of B? Width of the foundation? 2.8 meter. 2.8 meter. I got one value. 2.8 meter. Sir, 1.41. 1.41. 1.41. Name please. Usman. Usman. And for the 2.81 meter, name please. Waqar, sir. Waqar. 1.5. 1.5. Name please. Ibrar. Huge difference. How much should I give out of 10 to 2.8 meter, 1.41 and 1.5 meter? और मेरे साथ भी 1.417 आ रहा है. Name please. उज़ैर और रहमान. उज़ैर. उज़ैर, लास्ट में आपकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक हो गई है, सही है. तो बस ये जो आंसर है 1.41, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है. Now that's how you find out the width of the foundation. Now in another example, we are given with a long retaining wall. And in that long retaining wall, we are given with the width of the foundation B, that is equal to 3 meter, and the depth of foundation
is equal to 1 meter. Vertical load is applied. V is 282 kilonewton per meter. The horizontal load H equal to 1 or 2 kilonewton per meter, and the eccentricity from the center in the direction of B, that's equal to 0.36 meter. What else we need to know? We need to know about the shear strength parameters. And the unit weight information is equal to 18. We need to determine the factor of safety against shear failure. You can take a screenshot EB, which is eccentricity, vertical load 282, horizontal load 102, B is equal to 3 meter, depth of the foundation 1 meter, EB 0.36, phi prime 35 degrees, gamma equal to 18. So what we need to do, we need to use the Meyerhof bearing capacity equation in this problem. Okay, use Meyerhof's bearing capacity equation. So what should be the step number 1? Q ultimate fund. Name please. Usman sir. Okay. For finding the Q ultimate, what should be the step number 1? Okay, but let's now, I would say step number 2. How? We need to find out the bearing capacity of the soil. From where to start? Meyerhof equation. Obviously, Meyerhof equation we are going to use, but in solving the Meyerhof equation, what's in there in the Meyerhof equation? Okay, let me give you. Shape factors, N, Q, N gamma, depth factors. Let's start with the eccentricities, or the effective dimensions. Now you can start with the bearing capacity factors as well, but let's start with the effective dimensions. And for the effective dimensions, we need to find out the B prime. What should be the B prime, or the effective width of the foundation? Give me the value, please. .2. Okay, 2.2, I would say 8. Okay, now we are going for the bearing capacity factors.
N C, N Q, and N gamma. 1, 2, 3, please. Use Meyerhof bearing capacity factors. For friction angle equal to 35 degrees. $57.8. Okay, please wait. 57.8. 41.4. And gamma 42.4. 42.4, and I'm assuming with the voice Usman, right? Yes, sir. Okay, good. Usman has participated several times, so now I can identify his voice. So that's good for him, because now he can come to my office and he can tell me that, sir, why I got less marks in my assignment quiz and the paper, and I will show him that here is your paper, and if he is correct, obviously I'm going to increase his marks. Anyone else? सर उस्मान ने जो बताई है बिल्कुल इसी तरह सही है. What's your name? Zero रहमान सर. Uzair. Okay, Uzair. Sorry, okay. That would be same. Any difference there? Anyone who will give me a different value? And I would say, please give me different values. सर डिफरेंट दे नहीं सकते, वो एक टेबल है उससे देखते हैं. No, I don't know, but I'm having a 33 here. Okay. And I have two values. 41 is also there and 37 is also there. So I don't know. I would go with 41 because Osman is saying that he's taking 42. Basically, you are going to use the bearing capacity factors, the equations which were proposed by Meyerhof. Okay, you need to be very, very careful that now in this case you are going to use those equations. So I would say this value and 41, the NQ and N gamma, I would take from here, and then we will move towards the KP, which is equal to 35 degrees. What's the value of KP? 3.69. Now I can identify that voice as well. That's a Ebrar voice, right? Yes, sir. Okay, good. Usman and Ebrar. Now 3.69 here for the shape factors.
SC, SQ, S gamma. Sir, SC1. SQ. Sir, SQ and S gamma will be also equal to 1. Okay. Because it's a long retaining wall, and when length is very much greater than the width of the foundation, then you can use the strip footing shape factors. Okay, now what else we need to find out? We need to find out the depth factors. DC, DQ, and D gamma. Please. बाकी लोगों को समझ आ रही है जो हम सॉल्व कर रहे हैं? सजाद खान, ये तो इनने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और ज़ैर रहमान और आरिफ नवाज खान, आरिफुल्ला, असफंदियार, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसा? ओके, गुड। गुलाम कादिर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। गुड। तो थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करें ना प्लीज़, आप भी थोड़ा सा। ये जो लड़के हैं ये तो थक गए, वकार, हकीम, मशाल, आमना और इब्रार, उस्मान, उज़ैर, लाल जमान। 1.16. Terjemah Jesus algo sa jito jawab rakade ji biasa ko taga minima question ma utre tu sir. अच्छा, तासो हगा स्लो कैलकुलेशन वाला है। हाँ, लग तेज के खैर दे कैलकुलेशन तेज के कना दा खबरम खदा एग्जाम के उपकार राजी खान। Okay, so this is just an exercise that you can practice here, and you will note down that if you want to do your calculation a bit faster, you are going to make mistake there, and then you will recalculate again, and then you will find out that okay, where I'm making the mistake. So that practice is making you perfect or close to perfect. Okay, DC 1.1685. 1.1685. 685. Okay. DQ 1.09. 1.09. DC or DQ? DQ, sir. Okay. DC, DQ, and D gamma. Depth factors. Use those equations. Sir, D gamma 1.1. DC 1.2. And D gamma also equal to 1.09. Good. DQ and D gamma 1.085.
1.085, 1.085. ओके, थर्ड वैल्यूज मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास जो यहाँ पे आंसर्स हैं वो हैं 1.168 और हमारे पास 1.084 और 1.084 यहाँ पे। So these are the depth factors values. Okay, so then inclination factors. Please give me the inclination factors. $19.88. 19.8. Okay, that's right. ICIQ and I gamma. Okay, let me write down somewhere here 0.6084, 0.6084, and I gamma would be 0.1886. Okay, and then you will find out the Q ultimate using the Merhoff bearing capacity equations. If you put all these values, the eccentricity, B prime, bearing capacity factors, shape factors, depth factors, inclination factors, and you will get a value which will be 563 kilopascal, and P ultimate would be equal to 563 into B, which is B prime, which is 2.28, and we will get that as 1283 kilonewton per meter. And the factor of safety would be equal to P ultimate divided by the P applied, 1283 and 282, and that would be the 4.5. So the factor of safety against the shear failure is equal to 4.5. Now, we solved problems related to the Terzaghi's bearing capacity equation, the water table effect, and Merhoff bearing capacity equations, where we used different factors that how we can find out the ultimate bearing capacity and how we can find out the factor of safeties. Now we are given with a फाउंडेशन है। सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेते हैं? यस सर। ये किसने रिक्वेस्ट की है? नेम प्लीज। नाम तो बता दो, रिकॉर्डिंग में वैसे भी आ जाएगा। चलो ले लेते, थैंक यू।
लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। Okay, please confirm that you can hear me and the screen is visible. Yes, sir. Okay, thank you. Now, the length of the foundation here is equal to 1.8 meter. The width of the foundation is equal to 1.8 meter as well. We are given with a column of 0.4 meter and 0.4 meter. Now, if we draw here the x and y axis, the moment which is applied in the direction of B
MB is equal to 360 kilonewton per meter, and the eccentricity of the load, for example, this EB would be equal to 0.2 meter, and the eccentricity in the direction of length of the foundation would be equal to 0.25 meter, and the moment ML would be equal to 450. Now there is a effective area so this would be the effective area due to the eccentric load which is applied off the center. Now the load is applied here. This ignored area, we can say that it would be equal to 2EX, that would be 0.4 meter, and 2EY, that would be equal to 0.5 meter. Okay, now we will be using L prime and B prime. So this would be B prime. This would be L prime. What else we need to know? Okay, we need to know a few more things. For example, the vertical load which is applied equal to 1800 kilonewton, and the moment in the direction of width of the foundation is 360 kilonewton meter. This width of the column is equal to 0.4 meter. Depth of the foundation is equal to 1.8 meter, and the depth of the water table is equal to 6.1 meter. What else we need? We need friction angle, and C equal to 20 kilopascal. That's the cohesion, and the unit weight, or the effective unit weight, would be equal to 18 kilonewton per cubic meter. Take a picture from this Zeit board and take a picture from this Zeit board as well. And now, step number 1, from where to start?
सर फाइंड क्या करना है? Okay, we need to find out the Q allowable. और हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होनी चाहिए? फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास 3 होनी चाहिए. We need to find out the Q allowable. So from where to start? I would say let's start with the effect of water table, because we will clarify lots of things there. For example, H is equal to B by 2 tangent 45 plus phi by 2. Now, what's the value of the H? That would be equal to 1.676 meter, which is less than the depth of the water table, which means that water table is here and the height of the wedge is 1.76 meter. Therefore, both the terms are not affected by the depth of the water table or the location of the water table. Then eccentricities B, E, B, E, L, B prime, L prime, I need the value of B prime and L prime. Please. EB is equal to 360 divided by 1800, and this one would be 450 divided by 1800, and B prime and L prime. Ibrar, Uzair, Usman, Amna, Mashal, किधर हैं आप लोग? B prime 1.3 and L prime 1.3. Okay, B prime is equal to 1.4 and L prime is equal to 1.3. So here is a problem. We need to interchange, or we need to swap those values. B prime would be equal to 1.3 and L prime is equal to 1.4. आपने इन वैल्यूज को चेंज करना है, क्योंकि B प्राइम जो है ना वो छोटी होनी चाहिए, विड्थ जो है ना वो लेसर वैल्यू होनी चाहिए कंपेयर टू द L प्राइम जो कि इफेक्टिव लेंथ है. तो इसलिए हमने B प्राइम को 1.3 कहा और L प्राइम को हमने 1.4 कहा. ठीक है, समझ आइए, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको आपने समझना है. अगर B प्राइम की वैल्यू ज्यादा आती है तो आपने उसको स्वैप करना है L प्राइम के साथ. ठीक है, L प्राइम की वैल्यू छोटी है. Now give me the Meyerhof bearing capacity factors for 36 degrees using Meyerhof bearing capacity factors equations.
Quickly, please. NC 50.5. Okay, excuse me. 50.5. NQ 37. And 44.8. I would say, okay, let's go with that. Okay, and C is equal to 0, so we don't need to, no, it's not 0. C is 20 kilopascal. So, okay, so how about the shape factors then? Please confirm. SC would be equal to 1.715 and SQ and S gamma would be equal to 1.35. The depth factors would be equal to DC 1.543. DQ would be equal to D gamma 1.27. Give me the inclination factor, please. Inclination factors. Do you know one more you can note inclined AC? Horizontal, no. Horizontal load. Only moments are applied here. That's why it's equal to 1. Now give me the value of Q ultimate. Use all these bearing capacity factors. Effective dimensions, bearing capacity factors, shape factors, depth factors, inclination factors. And if you put all these factors in Meyerhoff's bearing capacity equation, then we will come up with a ultimate bearing capacity value, and that would be Double 570. यूनिट्स भी लिखा करें, ठीक है ना। ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ यूनिट्स के हवाले से, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको लिखना ज़रूरी होता है, और आंसर के साथ तो लाजमी लिखा करें। और कभी कभी जो है ना एक डिज़ायर्ड यूनिट में आपसे आंसर मांगा जाता है तो काइंडली उसी यूनिट में फिर आंसर दिया करें।
over 570. Any other value? बाकी लोगों को कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हामिद समझ आ रही है? हामिद है ही नहीं यहाँ पे तो। लाल जमान समझ आ रही है? हाँ ओके हामिद यहीं पे। चलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? माइक इशू यार, 1 साल हो गया है, अपने माइक के इशू पे थोड़ा बहुत कोशिश करें सॉल्व कर लें। कोरोना तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पे जा रहा है, वो तो वापस थर्ड वेव के साथ आ गया है। पता नहीं फोर्थ वेव भी आएगी कि फिफ्थ पे, अल्लाह ना करे कि आए। लेकिन आप अपने माइक और लैपटॉप वगैरह जो है ना सही कर लें। शामुद्दीन समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लैपटॉप से ज्वाइन किया है। हाँ इसका माइक भी काम कर रहा है। गुड। अनीस शाह सवार Suhail. Suhail has left the meeting. 5670 kPa 5670 kPa वहाँ पे जाते हैं कि वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। 5670 kPa 5670 इसने 100 किलो पास्कल ज़्यादा कर दिया है। अच्छा है, करीब हो गया, ज़्यादा करीब हो गया। आखिरी एक वैल्यू दे दें, हो सकता है कि वो एग्जैक्ट हो। सर 5685 5685 पूरे घर में बता रहा था, मेरे पास 5688 है। ये भी ठीक है, चलें तीनों को हम ठीक मान लेंगे, कोई मसला नहीं है। इतना 5000 में से अगर 100 kPa आपने इधर उधर कर लिया कैलकुलेशन में, कोई मसला नहीं है ड्यूरिंग द एग्जाम। अच्छा तो अगर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करनी है तो नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट दी फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो क्यू सेफ हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी अगर हमने क्यू सेफ फाइंड करना हो तो क्यू अल्टीमेट हमारे पास 5688 हो जाएगा डिवाइड बाय 3 एंड देन वी विल कम अप विद 1896। ये वो क्यू सेफ है दैट वोंट कॉज एनी shear failure। ओके ये वो सेफ bearing capacity है of this soil which won't cause the shear failure with the factor of safety of 3। okay, thank you very much for listening very patiently. Now if you have any question we will move towards the question and answer session.